Yes, in today's class, we need to talk about the physical properties of halogenoalkanes. Yes, physical properties of halogenoalkanes. So if we talk about some physical properties of halogenoalkanes, so the first one that we need to discuss is they are mostly liquids. They are mostly liquids, right? Very few of them are gases. You can say that almost 2 or 3 are gases, and the rest of all are actually what? Solids, right? Oh, sorry, liquids. And what are the gases? If you want to know their names, so you can say that the one which is chloromethane, chloroethane, and bromomethane are actually what? They are actually gases. Chloromethane, chlorobromomethane, and chloroethane. These three are actually gases, and the rest of all are liquids, right? You don't need to learn this, but I'm telling you, so it will be helpful for you if you want to. The rest of all are actually liquids. And why they are liquids, we need to talk about this later on. Before this, we are moving towards the density they have. So you need to remember that they are denser than water. They are denser than water. तो इनकी जो density होती है वो पानी से थोड़ी सी ज्यादा होती है, ठीक है ना? So that is why they can be, you can say that, form layer in the bottom, right? They can form layers, right? Because it is insoluble. If it is soluble, so definitely वो पानी में dissolve हो जाता, लेकिन ये insoluble है, इसलिए दो अलग-अलग layers बन जाएंगी, ठीक है? So you can say that bottom layer will be of halogenoalkanes if you mix with a liquid, right? Bottom layer आपके पास किसकी होगी? इनकी होगी. They are insoluble in water, definitely. That is why they are forming layer. They are insoluble in water because they don't have ions in them, because the non-polar behavior is actually having more you can say that impact over there in the molecules. So they are insoluble in water. We need to talk about this as well, why they are insoluble, right? And they have a pleasant smell as well. They have pleasant smell, the very unique smell they have, right? This is something different thing that you need to keep remember. And definitely they are gases and liquids, so they have low melting and boiling points, but definitely a little bit greater than alkanes, right? You need to keep remember this. Why? We need to talk about this as well, right? So let's see. If you talk about the molecule, any one of the molecule of halogenoalkane, so let's talk about one of the molecule, like we have CH3, CH2, CH2, C, and we are like this, right? So you can see over here in this molecule, we actually have two different kinds of bonds. The first bond that we need to talk about over here is this bond. You can see this. There is a difference of electronegativities over here into the carbon and bromine. So bromine is actually partial negative and carbon is actually partial positive. So this bond is actually polar bond. This is a polar bond. But if you talk about the rest of the molecule, the rest of the molecule, we have carbon and hydrogens, right? So this is actually the non-polar part of this molecule. So this is non-polar part, right? Because all the bonds over here actually having almost similar electronegativities, the power to attract the pair of electrons towards them, right? So they have almost similar electronegativities. That is why the rest of the part of this molecule is actually non-polar. So we know that once the molecule is non-polar, so it has what? Induced dipole. It has what? Induced dipole. So this part of the molecule is showing what? Induced dipole, which is one of the type of you can say that van der Waals force. And you can see this is having more induced dipole over here as compared to polar bond, which is actually have only a single bond over there. एक ही बॉन्ड है, ठीक है ना? और जो पोलर होते हैं वो आपके पास कौन सी डायपोल कॉज करते हैं? दे विल कॉज परमानेंट डायपोल. यहाँ पर जो चार्ज है वो परमानेंट है, ठीक है ना? ये जो पार्शियल चार्जेस आ गए हैं ये आपके पास परमानेंट डायपोल कॉज करते हैं. एंड राइट नाउ दिस इज आल्सो one of the type of van der Waals force, but right now this is lesser, right? And the induced dipole has a greater impact over here because there are a greater number of bonds
that have induced dipole, right? So you can say that overall यहाँ पर जो molecule होगा उसका जो impact होगा वो non polar हो जाएगा. उसकी वजह ये है कि आपके पास non polar behavior ज्यादा है molecule में as compared to polar behavior, right? So overall molecule आपके पास क्या बन जाएगा? It will be non polar, right बच्चों? Is that clear, every one of you? Yes, sir. So you can say that we have carbon to bromine bond over here, which is actually polar, but we have greater impact of the other carbon chains, which you can say that almost you can 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12 bonds हैं हमारे पास जो कि non polar है और सिर्फ एक bond ऐसा है जो कि polar है. That is why the rest of the chain having greater impact. So induced dipole यहाँ पर जो है ज्यादा हो गया as compared to permanent dipole. ठीक है ना? अब क्योंकि non polar behavior है, that is why it is insoluble in water. ठीक है ना? ये पानी के अंदर insoluble क्यों है बच्चों? क्योंकि पानी आपके पास it is one of the, you can say that polar compound. पानी आपके पास क्या होता है? एक polar compound होता है और ये आपके पास insoluble है. When they are having different behaviors, so definitely they are not soluble in each other. You need to keep remember. पानी के अंदर कोई भी चीज जब dissolve होती है जब उसके पास ions होते हैं. ठीक है ना? For suppose NaCl है उसको पानी में dissolve करोगे उसके पास ions हैं वो dissolve हो जाएगा. HCl है उसके पास partial ions हैं उसको पानी में dissolve करोगे dissolve हो जाएगा. H2SO4 है उसके पास partial charges हैं उसको पानी में dissolve करोगे dissolve हो जाएगा. बट ऑयल को पानी में dissolve करोगे dissolve नहीं होगा. उसकी वजह क्या है? उसके पास induced dipole है या उसके पास partial charges नहीं है. Am I clear, every one of you? Yes, sir. One more thing you need to keep remember बच्चों that van der Waals forces that are induced dipole are actually depending on what number of electrons. You need to keep remember that induced dipole depending on the number of electrons. So once the number of electrons are increasing, the van der Waals forces are going to be stronger, right? Once the van der Waals force is going to be stronger, the melting point, boiling point, density, state, and viscosity, and the rest of the physical properties of the molecules are going to be stronger and going to be increases. All right, Bacho? So that is why you need to keep remember, if you talk about alkanes, if you talk about bromoalkanes, if you talk about iodoalkanes, there will be a difference in melting point. For suppose if you have chloromethane, right, or if you have chloro like ethane, so definitely एक कार्बन बढ़ रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा बढ़ जाएगा. लेकिन अगर आपके पास क्लोरोमीथेन हो, ब्रोमोमीथेन हो और आयोडोमीथेन हो तो इसमें भी मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस होगा. फॉर सपोज अगर आप देखें कि आपके पास CH3Cl है और आपके पास CH2Cl है तो इन दोनों में मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस होगा क्योंकि बॉन्ड्स बढ़ रहे हैं. ठीक है ना? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो आपके पास मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब इंक्रीज होगा डाउन द रोड. नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल बढ़ रही है. बट अगर आपके पास क्या हो CH3Cl, आपके पास हो क्या CH3Br और आपके पास हो CH3I, तो देखें कार्बन नहीं बढ़ रहे, सिर्फ आपके पास एलिमेंट चेंज हो रहा है, क्लोरो ब्रोमो आयोडो. ठीक है ना? अब यहाँ पर क्लोरीन के पास होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन्स, ब्रोमीन के पास होते हैं 35 और आयोडीन के पास ऑलमोस्ट 53 होते हैं. तो इवन in the elements you can see this, the number of electrons are increasing. So if in an element the number of electrons are increasing, so also induced dipole increasing and the melting boiling point increases. तो इसका melting point सबसे ज्यादा होगा, इसका melting point कम होगा. Is that clear, every one of you? Yes. चलें इसका एक ग्राफ बना लेते हैं हम लोग ताकि हमारे लिए आसानी रह जाए और हमें ये याद भी हो जाए एक तरह से. सो एक ग्राफ होता है ना तो ग्राफ से काफी आसानी हो जाती है, आप लोगों को सारी चीजें प्रॉपर उसको देखने से आइडिया हो जाता है. सो आई एम जस्ट ड्राइंग अ ग्राफ ऑफ दिस सो इट विल बी इजियर फॉर अस कि हम इसको देखें और विजुअल अंदाज में हम अपने जो है प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकते हैं. ठीक है ना? सो लेट्स सी व्हाट आई एम गोइंग टू ड्रॉ ओवर हियर. देखें दिस इज वन ऑफ द ग्राफ ओवर हियर. आई एम प्लॉटिंग बॉइलिंग पॉइंट and over here I am plotting MR, right? It is just a journal MR over here. For suppose this is 0, this is 50, this is 150, this is 250, this is 350 and so on. This will be minus 50, this will be minus 150, this will be minus 250 and then so on, right? So for suppose a molecule having 50 MR, the molecule having 100 MR or 150 MR like this, ठीक है ना? इस तरह ये बढ़ रहा है
तो फॉर सपोज आपके पास कोई अल्केन है, सिंपल अल्केन है आपके पास, ठीक है ना। तो अगर आपके पास कोई सिंपल अल्केन होगा, सो द बॉइलिंग पॉइंट विल बी लाइक दिस स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, सो इट इज लाइक अल्केन्स। तो अल्केन्स का आपके पास देखें बॉइलिंग पॉइंट काफी कम हो सकता है, ठीक है ना। और अगर आपके पास क्लोरो अल्केन होगा, तो क्लोरो अल्केन का देखिए यहाँ से स्टार्ट हो सकता है आपके पास, इट विल बी लाइक दिस, थोड़ा सा ज्यादा होगा क्लोरो अल्केन्स का अल्केन्स के मुकाबले में, बिकॉज क्लोरीन हैव ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर अगर ब्रोमो अल्केन है तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, लेकिन थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा। तो ब्रोमो अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा और ज्यादा होगा, बिकॉज इट हैज ग्रेटर इंड्यूस्ड डायपोल, और आयोडो का और ज्यादा हो जाएगा, सो इट विल बी आइडोअल्केन। सो यू नीड टू कीप रिमेंबर दिस ग्राफ, आप इसको देखोगे आपको आइडिया हो जाएगा किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए या किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए। So we need to keep remember this, that boiling point of halogenoalkanes is higher than alkanes. Simple as this, due to the greater number of electrons. Once the number of electrons are increasing, the induced dipoles are increasing, and due to the increment of this type of van der Waals force, the melting boiling point increases. Same as it is, the boiling point also depends on the halogens, because when the halogens are going to be changed, the number of electrons are also increasing. Once the number of electrons within an element is increasing, that definitely impact on the boiling point of the molecule as well. Is that right, Bacho? Yes, Bacho, is that right? सर अभी जो आपने बताया वो दोबारा बता दें। Yes, the simple thing is this, but that induced dipole is actually depending on the number of electrons. So you can simply say that if number of electrons increases, right, you can say that induced dipole increases. Induced dipole is one of the type of van der Waals force, right? Induced dipole increases. When induced dipole increases, melting point, boiling point, and other physical properties changes, right? Increases, right? Flammability or volatility definitely decrease होती है, and the rest of all physical properties आपके पास क्या होती हैं? Increase होती हैं. Is that clear? Yes sir. ठीक है, चलें अब आगे चलते हैं. I talk about that halogenoalkanes are insoluble in water, and why they are insoluble, because they are having like van der Waals forces, induced dipoles over there, and also I told you that they don't have ions, or you can even say that they don't form hydrogen bonding with water molecules. The substance that form a hydrogen bonding with the water molecules are also soluble in water, but right now halogenoalkanes are not capable enough to form hydrogen bonding with water because they don't have ions. Simple as that, right? So they can be dissolved in any other organic solvent. Like अब देखें nail paint हम लोग लगाते हैं, तो nail paint हम पानी से वॉश करते हैं तो वो नहीं रिमूव होता, उसको रिमूव करने के लिए हमें थिनर लगाना पड़ता है. सेम एज इट इज, ये जो सब्सटेंसेस हैं ये भी डिसॉल्व होंगे, लेकिन पानी में नहीं होंगे तो फिर किसी और चीज में डिसॉल्व होंगे, एंड फॉर दैट यू कैन यूज नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, राइट बच्चों? Right. So let's talk about their reactivity. इनकी रिएक्टिविटी कैसी है, मतलब क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, नहीं करते हैं, अगर करते हैं तो कैसे करते हैं, नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं, whatever the reactivity we need to talk about this. So actually overall compound or molecule is actually non-polar, but we have carbon to halogen. This is cross means halogen, this is X, this is हेक्स, ठीक है ना. X means halogens. So जो कार्बन और हेलोजन के दरमियान बॉन्ड है ना, it's a highly polar. It is highly polar. This is actually one of the bond which causes many of the chemical reactions of this type of compounds, right? So during the reactions, halogenoalkanes actually can say that this bond is actually going to break heterolytically, right? अभी इससे पहले आप होमोलाइटिकली और हेटेरोलाइटिकली पढ़ चुके हैं. द सेम थिंग ओवर हियर ये अप्लाई होगी कि ये जो बॉन्ड है ये हेटेरोलाइटिकली ब्रेक होगा, एंड वी नो दैट व्हाट इज हेटेरोलाइटिकली ब्रेकेज. द हेटेरोलाइटिकली ब्रेकेज इज एक्चुअली व्हाट, जब आपके पास बॉन्ड टूटे और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक कार्बन का और एक हेलोजन का.
तो अगर अगर दोनों इलेक्ट्रॉन एक तरफ चले जाएं और एक के पास से दोनों ही चले जाएं, so that is what unequal distribution. That is what unequal distribution. तो for suppose ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन अगर मैं इसको भेज दूं, so halogen become what? Negative by gaining one extra electron, and carbon become positive. So this is what? This is unequal distribution. Unequal distribution. तो ये बॉन्ड टूट जाता है और यहाँ पर आपके पास हेट्रोलाइटिकल ब्रेकेज होता है, and this type of breakage is known as hydrolysis या hydrolytical feature, right? You can see this. I call this hydrolysis, which is very easier to call. So this is hydrolysis, a type of bond breakage in which a bond breaks and unequal of distribution of electrons occur, right? तो यहाँ पर आपके पास क्या होता है? आपके पास ये बॉन्ड टूटता है, हेलोजीनोअल्केन्स में ये बॉन्ड टूटता है, जिसकी वजह से यहाँ पर रिएक्शंस होते हैं, ठीक है ना? सो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि ये जो है nucleophilic substitution reaction possess करते हैं. This is the new thing that you need to remember. This is actually the third type of mechanism that you need to discuss in your syllabus, nucleophilic substitution. सबसे पहले हमने किया था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म, फिर हमने किया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मैकेनिज्म, और अब ये आपकी ऑर्गेनिक का थर्ड मैकेनिज्म है जो कि आपको याद करना है, जो आपको सीखना है. इट इज एक्चुअली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. Right. So now this substitution is actually due to the nucleophile. So what is nucleophile? You need to keep remember what is nucleophile. यहाँ पर जो substitution हो रही है ये अब इलेक्ट्रोफाइल की वजह से नहीं हो रही, अब ये न्यूक्लियोफाइल की वजह से हो रही है. So you must need to know what is nucleophile. आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ठीक है ना? So nucleophile is something like इलेक्ट्रोफाइल आपने पढ़ा था, तो वहां क्या था? इलेक्ट्रोफाइल वो होते थे जो कि आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करते थे. इलेक्ट्रोफाइल्स आपके पास वो होते थे जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करते थे. दे आर कैपेबल इनफ टू रिसीव द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. बट व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल उनके उल्टे होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करते हैं. तो हमारे पास हमारे सिलेबस में कुछ न्यूक्लियोफाइल्स हैं जो कि हमें पढ़ना लाजमी है. One of the nucleophile is water, that you need to keep remember. In water we have two lone pairs that oxygen has, right? Same as it is hydroxide. Hydroxide has 3 lone pairs to provide, right? And we have cyanide as well. This is one of the nucleophile that we have. In this, carbon and nitrogen both have 1 each, a lone pair, and in ammonia we have nitrogen which has lone pair as well. So ये 4 आपके पास न्यूक्लियोफाइल आपके सिलेबस में मौजूद हैं जो कि अपना लोन पेयर प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि अपना लोन पेयर प्रोवाइड कर सकते हैं. तो जब ये किसी को लोन पेयर प्रोवाइड करते हैं तो दे कॉज्ड व्हाट? nucleophilic substitution reaction. And why we are calling them substitution, why we are not calling them addition reactions? Because there is no pi bond. There is no pi bond. When there is no pi bond, there is no addition reaction, because all the carbons having 4 complete bonds, right? 4 single individual bonds. So वहां पर addition नहीं हो सकती, अब वहां substitution ही possible है, right? So you can say that because the molecules are already saturated. Molecules, yeah, compounds are already saturated, so that is why they can maximum show substitution reaction. Already saturated, 4 each carbon having 4 bonds, तो वहां substitution हो सकती है, addition नहीं हो सकती है. That is why the halogenoalkanes show nucleophilic substitution reaction. Is that clear, बच्चों? Any problem, any one of you? Yes. Should we move towards chemical properties? Yes, sir. Okay, so let's move on towards chemical properties. This is what I just told you about the reactivity of halogenoalkanes, that they can react like nucleophilic substitution reaction. ठीक है ना? बस अभी इसमें इम्पोर्टेंट चीज क्या थी? इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये थी that you need to keep remember कि आपके पास जो halogenoalkanes होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं. न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो कि अपना लोन पेयर प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसलिए कर रहे हैं कि इनकी कार्बन के 4 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं. अगर पाई बॉन्ड होता है तो एडिशन रिएक्शन होता है, अदरवाइज एडिशन रिएक्शन नहीं होता है.
अब एक्चुअली में हमने पढ़ना है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते क्या है, ठीक है। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स केमिकल प्रॉपर्टीज दैट आर मच मोर इंपॉर्टेंट देन द अदर थिंग्स. Chemical properties, right? So we are going to start chemical properties. Chemical properties. So the first chemical property that you need to keep remember is this. For suppose you have any of the halogenoalkane, any. This is one of the halogenoalkane, right? You need to react it with NaOH aqueous. NaOH aqueous, or you can even consider KOH aqueous. Whenever halogenoalkanes are going to reacted with NaOH or KOH aqueous, they are going to substitute hydroxide or hydroxyl in the molecule, right? So ये जो OH है, ये यहाँ पर substitute हो जाएगा bromine की जगह पर, right? And it will become hydroxyl now because bond बना लिया है, और जो Br निकलेगा वो Na के साथ मिलकर NaBr बना लेगा, या you can say that K अगर आपके पास होगा तो KBr बना लेगा. This is the first reaction that you need to keep remember about this. You must need to remember this condition, aqueous. यहाँ पर आप इथेनॉल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आप इथेनॉल यूज करोगे तो फिर हैलोजेनोअल्केन अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा. यू नो दिस, राइट? एंड फॉर दिस द कंडीशन दैट यू नीड टू कीप रिमेंबर इज हीट अंडर reflux. You need to heat it under reflux, right? So this is what you need to understand. Even I can write this equation in the other forms as well. For suppose I am just drawing this structure like this. You can see this. This is what? Bromoethane. This is what? This is bromoethane, right? So when you're reacting it with what? Any hydroxide or sodium hydroxide or whatever potassium hydroxide you are using, but it should be aqueous. So this OH is going to replace Br, and you will have this molecule, and this is one of the alcohol. You can say that this is ethanol, right? This is what? Ethanol, and along with you will have NaBr to form. So you can see this, bacho. What is this? There's a substitution of bromine by hydroxyl, right? Or even right now you can see this. अगर आप NaOH use करो या आप KOH use करो, इस पर कोई impact ही नहीं पड़ रहा है. तो sodium or potassium right now they are spectator ions over here, so we can even write ionic equation over here if you want to. अगर आप इसकी ionic equation लिखते हो, तो you can even write like this: CH3 CH2Br is actually the compulsory ion is what? Hydroxide aqueous. अब इसके साथ आप सोडियम लगाओ या पोटेशियम, कोई फर्क नहीं पड़ता. आपके पास बनेगा क्या? इंपॉर्टेंट चीज है अल्कोहल, व्हिच वी नीड टू शो. हमें अल्कोहल फॉर्मेशन दिखानी है, व्हिच इज इंपॉर्टेंट. और ब्रोमाइड निकल जाएगा इन द aqueous स्टेट. इज दैट राइट एवरी वन ऑफ यू? Yes, every one of you. Is that right? Yes, sir. Okay, so can any one of you, or I think you all, अब देखें होता क्या है आपके पास बच्चों. दिस इज एक्चुअली द प्रोसेसर जिसके अंदर आपके पास रिएक्शन होगा. फॉर सपोज मैंने हैलोजेनोअल्केन यहाँ पर ले लिया, ठीक है ना. दिस इज व्हाट? हैलोजेनोअल्केन. मैंने यहाँ पर हैलोजेनोअल्केन सपोज कर लिया, और इसके साथ साथ मैंने कोई हाइड्रोक्साइड भी डाल दिया. फॉर सपोज आई एडेड ओवर हियर aqueous sodium hydroxide as well. So it is actually what? Any of the halogenoalkane along with NaOH, right? So this NaOH is actually aqueous, and we know this that this is ionic compound. This is what? Ionic compound. और आपके पास जो ऊपर वाला है, this is actually covalent compound, right बच्चों? तो आपके पास they are two different things. एक ionic compound, एक covalent compound, and we know that ionic compounds का melting point बहुत ज़्यादा high होता है, तो boiling point तो बहुत ही ज़्यादा ऊपर हो जाएगा, ठीक है ना. लेकिन covalent compounds क्योंकि liquids होते हैं या gases होते हैं, तो उनका melting boiling point काफी कम होता है. So when you are heating from the bottom, so definitely this chloro ethane can evaporate, right? वो उड़ सकता है, बहुत जल्दी हो सकता है ना. So the vapors can evaporate from here at low temperature without reaction. वो evaporate हो सकते हैं, यहाँ से reaction किए बगैर ही evaporate यहाँ से हो सकते हैं. तो definitely यहाँ से घूमते हुए यहाँ जा रहे होंगे, है ना, ऊपर जा रहे होंगे. तो हमने क्या किया हुआ? हमने एक ऐसा स्टार्टअप लगाया हुआ है कि हम ठंडा पानी यहाँ से इन करते हैं. जब हम ठंडा पानी यहाँ से इन करते हैं, so it is actually circulating. The cool water is actually circulating
अराउंड दिस नेक, ठीक है ना। अब इसके अराउंड ठंडा पानी रिवॉल्व कर रहा है, तो ये जो वेपर्स हैं इनका टेम्परेचर ठंडे पानी की वजह से कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। व्हेन इट विल बी लोअर द टेम्परेचर, सो ये वापस से लिक्विड बनकर दे विल बी कम बैक टू द कंटेनर, वो वापस अपने कंटेनर में आ जाएंगे। So this is actually the condenser that we were talking about in O levels as well. This is this time vertical condenser. अभी जो vertical condenser होता है इसको आप क्या नाम देते हो, it is reflux condenser. ये क्या होता है, reflux condenser होता है। अब जब आप वो कहते हैं डिस्टिलेशन करते हैं, तो उस डिस्टिलेशन में आप इसी कंडेंसर को टिल्ट करके लगाते हैं, एंगल से लगाते हैं, तो जो गैस के वेपर्स होते हैं उनको आप लिक्विफाई कर कलेक्ट करते हो। बट राइट नाउ वी आर नॉट कलेक्टिंग वेपर्स ओवर हियर, हम क्या कर रहे हैं, हम उन वेपर्स को लिक्विफाई करके बैक टू द फ्लास्क भेज रहे हैं ताकि रिएक्शन पूरा हो सके। वी वांट दैट कि भाई रिएक्शन पूरा करके आओ, ये ऐसे उड़कर हमारे पास ना हो आधे अधूरे। तो वी वांट दैट कि जो हैलोजन अल्केन है इट इज गोइंग टू रिएक्ट कंप्लीटली विद द NaOH और QH जो भी आप डाल रहे हैं, और इट फॉर्म व्हाट, अल्कोहल। इज दैट क्लियर एवरी वन ऑफ यू, व्हाट डज द हीट अंडर रिफ्लक्स मींस? ठीक है, इज दैट क्लियर एवरी वन ऑफ यू? Yes, sir. The simple thing is this, NaOH, KOH, whatever you are using is actually ionic compound, so it can not evaporate, but halogenoalkanes are covalent molecules, so they can evaporate at a low temperature as well. We just need to place the reflux condenser, so they just liquefy the vapors that are trying to escape from the container. We just want to make them liquid again and back to the flask, so the reaction has been complete. Right, bacho? So this is the thing that you need to understand about this. Any problem if you want to ask? Any problem that you want to ask, bacho? अच्छा देखिए, अभी मैंने इसके मैकेनिज्म की बात नहीं की है। वी नीड टू शो द मैकेनिज्म एज वेल टू यू, बट बिफोर गोइंग टुवर्ड्स द मैकेनिज्म I just need to talk about something different with you, right? So let's talk about what are the main points of this. Let's see, बच्चों आपको हैलोजिनोअल्केन्स के बारे में क्या पता है? I just want to ask, आपको हैलोजिनोअल्केन्स के बारे में क्या पता है? If I ask you what is halogenoalkane, तो आप क्या बताओगे? हैलोजिनोअल्केन क्या होता है? Any one of you can you tell me बच्चों what is halogenoalkane? या वो कैसे बन सकते हैं, या उसका कोई रिएक्शन आपको पता हो, whatever. Definitely we have a lot of reactions of halogenoalkanes जो कि हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़े हैं. Right now हमने देखा कि हैलोजिनोअल्केन का कनेक्शन, अभी जो हमने केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी है उसको हमने अल्कोहल से रिलेट किया, मतलब कि हम हैलोजिनोअल्केन से अल्कोहल्स बना रहे हैं, राइट? बट इफ यू रिमेंबर इन योर प्रीवियस चैप्टर आपने हैलोजिनोअल्केन एल्कीन से भी बनाया था, और आपने अल्कीन वापस से भी बनाए थे हैलोजिनोअल्केन से। सेम एज इट इज, आपने अल्कीन से अल्कोहल भी बनाया था और अल्कोहल वापस भी बनाए थे आपने अब बैक टू अल्कीन एज वेल, ठीक है ना। और उसके अलावा आपके पास अल्केन था, आपने अल्केन से भी हैलोजिनोअल्केन बनाया था बाय फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। सेम एज इट इज, आपने अल्केन से अल्कीन भी बना सकते हैं आप वैसे क्रैकिंग के जरिए, बट हमने वो अभी नहीं किया, तो वी कैन रिमूव दिस। हमने बैक वाला यस बच्चों, इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes. तो ये वो सारे रिएक्शंस हैं जो कि हम कर चुके हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट सम reagents and conditions of these reactions. We know that अगर हम अल्कीन से अल्केन में जाना चाहते थे तो हम हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते थे in the presence of nickel at 200 degree Celsius temperature. We know this. इसी तरह अल्केन से हैलोजिनोअल्केन में आने के लिए there must UV light over there and any halogen, chlorine or bromine, whatever you have. Same as it is, अगर आप अल्कीन से हैलोजिनोअल्केन में जाते हो, so there must be hydrogen bromide at room temperature and pressure. You should have hydrogen bromide or hydrogen chloride, whatever you want.
substitute over there or add over there. अगर वापस आना चाहते हो तो this is what the maximum problem you can suffer over here. It is NaOH or KOH in ethanol, heat under reflux. This is the problem. अगर आप हेलोजिनो अल्केन से अल्कीन में जाना चाहते हो तो NaOH in ethanol, heat under reflux, और अगर आप अल्कोहल में जाना चाहते हो तो NaOH aqueous, heat under reflux. This is the thing जो कि आपको परेशान करेगी. हेलोजिनो अल्केन से अल्कीन में आते वक्त NaOH आपने इथेनॉल वाला यूज करना है, और हेलोजिनो अल्केन से ही अल्कोहल में जाते वक्त आपको NaOH aqueous यूज करना है. दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू कीप रिमेंबर. दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू रिमेंबर. ये हमेशा भूल जाता है इंसान, ठीक है ना. तो ये आपने याद रखना है. दूसरा, अल्कीन से अल्कोहल में जाते वक्त वी नो दैट वी नीड टू रिएक्ट विद स्टीम along with dilute phosphoric acid, और इसके अंदर हमें यूज करना होता है क्या, 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और इफ यू वांट टू कम बैक to the alkene, so we know that concentrated sulfuric acid at 200 degrees Celsius temperature आप use कर सकते हो, और you can even also use ammonium oxide at 350 degrees centigrade or degree Celsius temperature. So these are the things जो कि हम already अब तक पढ़ चुके हैं ऑर्गेनिक में, ठीक है. साथ साथ this is what one of the reduction process. This is a type of reaction which is reduction. This is what free radical substitution reaction जो कि हम पढ़ चुके हैं. फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, राइट. और ये बैकवर्ड वाला रिएक्शन जो था वो क्या था आपके पास, डिहाइड्रेशन या एलिमिनेशन. और ये जो जाने वाला था ये था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. सेम एज इट इज, जाने वाला आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और बैकवर्ड इज एलिमिनेशन. दिस इज नॉट डिहाइड्रेशन, दिस इज ओनली एलिमिनेशन. एंड दिस इज द न्यू वन जो कि अभी हमने पढ़ा है. दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, राइट बच्चों. तो ये सारी इंपॉर्टेंस आपके सामने है कि क्यों हेलोजिनो अल्केन्स को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वी हैव अ लॉट ऑफ रिएक्शंस connected with halogenoalkanes, right? Or you can say that this the center part what I'm talking about right now, we are talking about this right now, this halogenoalkanes connection with alkenes and the connection with alcohol. अभी एक रिएक्शन बाकी है अल्कोहल का बैक टू हेलोजिनोअल्केन्स, वो अभी हमने करना है, वो हम अल्कोहल्स में करेंगे, ठीक है ना. तो ये 6 रिएक्शंस यू कैन से दैट दे आर द हार्ट ऑफ योर एएस ऑर्गेनिक. ये 6 रिएक्शंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. यहाँ जाने वाला, वापस आने वाला, जाने वाला, वापस आने वाला, जाने वाला और वापस आने वाला भी आपने पढ़ना है. So these 6 reactions are pretty much very, you can say that important part of your AS organic. You must need to go through all these reactions before you are attempting any of the paper, right बच्चों? Is that clear? Yes, sir. So I am giving you some skill test to do. Can you solve these questions or not? Can you solve, बच्चों, if I give you some questions? So let's see. There are some skill tests for you. हम देखते हैं कि हम उसको solve कर सकते हैं या नहीं. You can use this information that I gave you right now. You can use this information. For suppose you have one of the molecule like this. You're reacting it with what? You are reacting it with HBr at room temperature and pressure, and also you are reacting it with bromine liquid. Liquid मतलब सिर्फ bromine है आपके पास. Or you can say that bromine in hexane. There should not be a water molecule over there, right? Can you do this, बच्चों? जल्दी से आप इसको मुझे करके दिखाएं कि क्या होने वाला है. This is the one part that you need to do. Second part is, for suppose you have one of the molecule right now like this. This is OH. This is what CH3. You have H, 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 CH3, H, and H. Tell me the possible products if you are reacting it with NaOH in ethanol. NaOH in ethanol and heat under reflux. Right. And for suppose you have this molecule, you have 1, 2, 3, 4 carbons, and on this carbon we have CH3,
On this carbon we have H, we have this is CH3, this is CH3. What happen if you are treating it with water or steam, you can say that, in the presence of dilute phosphoric acid? 350 degrees Celsius is the temperature and 100 atmosphere is the pressure, right? And also, what is the reaction of this product with NaOH aqueous, and what is the final product you will have, right? चलें, ये 3 पार्ट आपने करने हैं, जल्दी से मुझे करके दिखाएं ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज